Hello students, this video is for grade 1st. So let us start. In this sheet, we are going to study 3 different parts in which we will get to know about 3 different subjects, which are English, Maths and EVS. So let's start with our first subject of the sheet, English. The question is, circle the word with correct spelling. सो वी आर हैविंग 12 वर्ड्स. ओके, हमें 12 वर्ड्स दिए हुए हैं. हर वर्ड में हमें दो दो ऑप्शंस मिले हैं. वी हैव टू सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड. वही वर्ड को सर्कल करना है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट होगी. अंडरस्टूड? फर्स्ट वर्ड इज स्लीप. स्लीप मतलब सोना. सो विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? द करेक्ट स्पेलिंग इज SLEEP. Sleep. Okay, this is the correct spelling. Next word is heel. The correct spelling will be HEEL. Heel. The third word is gone. Okay, gone क्या है आपका? go का थर्ड फॉर्म है. go, went, gone. 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 Next word is keep. 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 Fifth word is stay. stay मतलब रहना. STAY. Stay. And the sixth word is solve. 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 Okay, so in this way you have to circle on the correct spelling. Seventh word is happy. 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 Eighth word is naughty. naughty मतलब बदमाश. NAUGHTY. Naughty. Next word is sweet. Sweet मतलब मीठा. SWEET. Sweet. Sweet मतलब मीठा. Okay, so in this way you have to circle all the words which are having correct spelling. उन्हीं वर्ड्स को सर्कल करेंगे जिनकी स्पेलिंग करेक्ट होगी. Okay, yeah.
You can see we have circled the words having correct spelling. Now, see the next section of the sheet. Maths. Arrange the following numbers in descending order. Okay, descending order में numbers को arrange करना है. Descending order means in decreasing order, from bigger to smaller, बड़े से छोटा. So which one is the biggest number in these? 203, 404, 107, 309 and 201. Which one is the biggest number? 404. So सबसे पहले हम राइट करेंगे 404. After that, okay, this will be the sign. After that, 404 से छोटा कौन सा नंबर होगा? 309. After that, what we will write? 203. After that, 201. Then last number will be 107. See. And in between these numbers, you will put the greater than, lesser than sign. Okay. Okay, this sign is of greater than. Okay, lesser than की sign opposite direction में होगी. Like this. Wait. This is lesser than. This is greater than. Okay. Greater than, lesser than. So in this way you have to arrange all the numbers in descending order. I hope you all have understood how to do. And rest of the three questions you will do by yourself for your practice. Now, the last section of this sheet, which is EVS. In this we are going to study about पर्सनल हाइजीनिक आइटम्स. ओके, पर्सनल हाइजीन के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं उनके बारे में जानेंगे. फर्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. मैच क्या करना है? पर्सनल हाइजीन के कुछ आइटम्स हैं और वो कौन से बॉडी पार्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें ही हमें मैच करना है. लाइक फर्स्ट इज कॉम्ब. कॉम्ब हम कहाँ यूज़ करते हैं? इन आवर हेयर्स, टू कॉम्ब आवर हेयर्स. नेल कटर, टू ट्रिम आवर nails. Soap, to clean our body. Toothbrush, to clean teeth. And earbuds, to clean our ears. Okay. See, comb for hairs. Okay, let me to comb our hairs, nail cutter to trim our nails, soap to clean our body. Wait a minute. Soap to clean our body, toothbrush to clean our teeth. Same सामने ही है. और and the earbud to clean our ears. Okay, सारा सेम कलर हो गया इसलिए थोड़ा कम पता चल रहा है. Okay. So in this way you have to match. And the last question is, name any 5 items of personal hygiene that you use daily. पर्सनल हाइजीन के कोई 5 आइटम्स के नेम आपको राइट करने हैं जो आप रोज यूज करते हैं. लाइक योर
टूथपेस्ट, टूथपेस्ट आप रोज यूज करते हैं ब्रश करने के लिए। सोप, सोप आप रोज यूज करते हैं बॉडी क्लीन करने के लिए जब नहाते हैं तो। सैनिटाइजर टू क्लीन योर हैंड्स, you use hand wash, okay, so you have to write any 5 things. I have given you a few things name, मैंने आपको कुछ चीज़ों के नेम बताए, आप कुछ और चीज़ों के नेम राइट कर सकते हो, लाइक योर toothbrush, soap, nail cutter, comb, earbud. These are some of the things which you use for your personal hygiene. Hygiene मतलब to keep yourself clean and safe is known as your hygiene. I hope you all have understood this sheet very well. If you are having any kind of doubt related to any question or any topic, you can ask me. Thank you.